Good evening. Welcome to Sriram's IS. So we are talking about today. Discuss about the concluding phase of our modern India. Some of the important dimension of the prelims and the mains. So in the series of discussing with the modern India, I hope you people had understood till 1947 all the facets, important dimension of the modern India. And something remain to discuss is like the economic history of India. So economic history of India, what are the factors, what are the facets, particularly the impact of British economic policies, impact of British economic policies. I told you that in 100 years of the company's rule and the 90 years of the British Parliament, entire India, it was ruined by the Britishers. As we have seen that the data said also very convincingly that 1757, if you look at the GDP of India, its GDP was around 25% of the world GDP. Okay, and at the same time, India's contribution in the world trade was around 50%. Because handicraft was the item which was mostly in demand. So India's contribution to world trade was 50%. It accounts for the 50% of the total world's demand of the trade. So that is how you can understand that how prosperous this land was. And since India was exporter of consumer goods and bullions was flowing in this country. So that is the reason why the balance of trade always in favor of India. Balance of trade was in favor of India, and which make all possible ways that India should be an attractive destination for any aspirants of the trade. Okay. So 1757 GDP, 25% of the world GDP and 50% of the trade. Then at the same time, as far as discussion about the 1947 means 190 years of the British colonial period, you'll find that 50%, 25% of the world's GDP, now it had reduced to 4%. इतना कम हो गया ये 4% हो गया. And then 50% of share in the trade had reduced to 1%. So how categorically the Indian economic system lost the entire avenues. और इसीलिए तो बोलते हैं कि जो गोल्डन बर्ड था इंडिया को, जो गोल्डन बर्ड बोला जाता था, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया में जो सुपेरियरिटी का कॉन्सेप्ट था इंडिया का, वो सब लूज होकर के गोल्डन बर्ड बिकेम बर्ड. केवल चिड़िया रह गया ये देश. So 1757 GDP, and that had reduced 50% and then 4%. That is how the golden bird became bird. तो इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज में जब भी हम डिस्कस करते हैं इस तरह की बातें, तो इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसमें पहला डायमेंशन आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का. ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक सिंपल मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं लोग. ड्रेन क्या मतलब होता है? ड्रेन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड विदाउट एनी सब्सटेंशियल रिटर्न. ड्रेन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड विदाउट एनी सब्सटेंशियल रिटर्न. इसको हम लोग
ड्रेन के सेंस में यूज करते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड विदाउट एनी सब्सटेंशियल रिटर्न, इसको हम लोग ड्रेन के सेंस में यूज करते हैं। सो इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, ड्रेन में हम लोग देखते हैं कि ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी, वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट, सो दादा भाई नौरोजी बहुत एक्टिव थे लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी स्टैब्लिश किया था लंदन में। सो दादा भाई नौरोजी इन 1867 ही रोट अ बुक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी थी। अन ब्रिटिश रूल का क्या मतलब है? अन ब्रिटिश रूल का सीधा मतलब यही है कि जो इंस्टीट्यूशन और फंक्शन इंग्लैंड में है, सिमिलर इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शन देयर शुड बी इन इंडिया एज वेल, भारत में भी वैसा ही इंस्टीट्यूशन और फंक्शन होना चाहिए। मगर जो इंडियन गवर्नमेंट है, इट इज अन ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसके चलते यहां पर पॉवर्टी है। सो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने जर्नल्स भी लिखा था, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। सो इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब जब से 1757 से ही चार्ज करना शुरू करें हम लोग। सो 1757 1757 तो 1757 में जो पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग का, कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हुई, तभी से ईस्ट इंडिया कंपनी ये कोशिश कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट करने का कि वी आर इन द लॉस, वी आर इन द लॉस मीन्स आवर कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, ये सब जो है काफी कॉस्टली है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, दे वर बिकमिंग वेरी रिच, दे बिकेम ओवरनाइट मिलियनर, और यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डेप्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड किया था कि नीडेड लोन, लोन चाहिए। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड सैंक्शनड लोन, 1.4 मिलियन पाउंड सैंक्शन किया था लोन, जो 4% इंटरेस्ट रेट पर यह लोन सैंक्शन हुआ था। सो 4% इंटरेस्ट रेट पर जो लोन सैंक्शन हुआ था, सो 4% इंटरेस्ट रेट पर जो लोन सैंक्शन हुआ, ठीक है, उसी को हम लोग देखते हैं, दैट इज 1.4 मिलियन। और तभी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेट में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। सो 1.4 मिलियन पाउंड, 4% interest rate categorically, and thereafter these all things started counting as debt on India, and this debt keep on increasing. हमेशा जो इंडियन गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट था, उसका जो बजट होता था, इट्स ऑलवेज इन डिफिसिट, एंड दैट वाज कंसिडर्ड एज डेब्ट ऑन इंडिया। सो देयरफॉर इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया ये भी बढ़ता जा रहा है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अ पॉवर्टी इन इंडिया। So Dadabhai Naoroji had a very special contribution, a very fantastic contribution related to the drain theory. उसके बाद उसमें दूसरा बड़ा नाम आता है आरसी दत्त। आरसी दत्त, he wrote economic history of India. Till date, this is the best book to understand the colonial period. Economic history of India till date. There is a best book to understand the colonial period.
Best book to understand the colonial period. Economic history of India. और आरसी दत्त, he was an ICS थे आरसी दत्त, पहली बात. Then he became the president of Indian National Congress as well, and he was an economist. तो आरसी दत्त का जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है, what are the forms of drain, the way that India was ruined by the British. So forms of drain पर इनका काफी बड़ा रिसर्च है. Then Rajni Pamdat. Rajni Pamdat also wrote India Today, and India Today is actually the book which start the colonial phase from 1757, and there are various stages of colonialism in between 1757 to 1947. There are mainly three stages of colonialism. Mainly three stages of colonialism. Three stages of colonialism. That is called India Today. R.C. Dutt, in his book Economic History of India, and R.P. Dutt in his book India Today, 1757 to 1947, three stages of colonialism. Okay, so how the colonial phase was discussed. Colonial phase was discussed by R.C. Dutt and R.P. Dutt. उसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो जी सुब्रमण्यम अय्यर है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ही वॉज एडिटर ऑफ द हिंदू. और जी सुब्रमण्यम अय्यर ने काफी बेहतरीन एडिटोरियल कंपाइल किया था टू डिस्कस अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश पीरियड इन हिज न्यूज़पेपर द हिंदू. तो जी सुब्रमण्यम अय्यर का भी काफी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है इन डिस्कसिंग अबाउट द इंडियाज कंट्रीब्यूशन. ओके, उसके बाद आता है दिनसा वाचा. दिनसा वाचा का नाम आता है. इज अ वेरी प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. M.G. रानडे, ही ऑल्सो हाईलाइटेड द ड्रेन थ्योरी. उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, he also highlighted the drain theory. M.G. रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा. और उसके बाद आप देखिए जो पॉइंट है उसमें नाम आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी. सो दीज वेर द नोटेड पर्सनालिटी जिन्होंने कि काफी ज्यादा डिस्कशन किया है ड्रेन थ्योरी के ऊपर. तो जरा फॉर्म्स ऑफ ड्रेन पर जब चर्चा करते हैं कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ड्रेन, तो फॉर्म्स ऑफ ड्रेन में पहला तो ट्रेड एंड कॉमर्स है. माय डियर, ये जो ट्रेड के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन है, इट वाज डेफिनेटली नॉट न्यू. It was definitely not new. Trade and commerce. Trade and commerce. It was definitely not new. Trade or commerce, 1717, it had started. फरमान ऑफ 1717 आपको पता है, याद है. सो फरमान ऑफ 1717 एंड देन अल्टीमेटली इट हैड रिजल्टेड इन प्लासी प्लंडर. प्लासी प्लंडर. सो फरमान ऑफ 1717 इट हैड रिजल्टेड इन प्लासी प्लंडर. प्लासी प्लंडर. सो ट्रेड एंड कॉमर्स, forms of drain. 1717, फरमान ऑफ 1717. उसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है गिफ्ट एंड एक्सचेंजेस.
gift and exchanges. Valuable gifts and exchanges. Precious metal and stones. It was sent from India to England. Precious metals and stones. It was sent from India to England. Indian Raja, Nawab and Jamindar. Actually, they were the main contributor of this type of trade. So precious metals was transferred from India to England. Third, then the biggest form of drain, it was home charges. Home charges, it was said that it was the biggest form of drain. So look at this. What is home charges? Home charges, I told you, this is the single most important form of drain. होम चार्जेस यहां पर आपको क्या क्या आता है, जैसे देखिए सैलरी एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स. आप जानते हैं जो हायर पोस्ट था दैट वाज रिजर्व फॉर द ब्रिटिशर्स, हायर पोस्ट, एंड दे वर पेड विथ वेरी हाई सैलरी. When Cornwallis, I'm giving you one example, when Lord Cornwallis, he created the post of district collector and district judge, DC and DG, they created the post of district collector and district judge. The salary of district collector and district judge was 1500 rupees per month, and there was 1% commission. 1% commission of the total revenue collection. There was a 1% commission for the total revenue collection. So home charges. DC and DJ. Home charges. So salary and pension was a very important form of trade. ये लोग रिटायर होकर के इंग्लैंड चला जाता था और ये लोग जितना सैलरी उतना पेंशन लेके मरता था. So that is how the home charges became the single most powerful source of trade. उसके अलावा cost of military training, cost of military training, cost of arm purchase, cost of arms purchase, cost of military training, cost of arms purchase, okay, then interest paid by British, interest paid by the Indian government, dividend paid to the shareholders of East India Company. ये सब होम चार्जेज में आता था and it was single most important form of trade. Single most important form of trade. Cost of military training, cost of arms purchase, interest paid by the Indian government, dividend paid to the soldiers, to the shareholders of East India Company. तो ये काफी इंपॉर्टेंट फेनोमेना था ड्रेन का. देन अनदर फॉर्म ऑफ ड्रेन, देखो इसमें है द फोर्थ फैक्टर, इट वाज rupees and pound
exchange rate. Rupees and pound exchange rate. Rupees and pound exchange rate. Fine. So rupees and pound exchange rate. So exchange rate was fixed in such a way that it had promoted the British export and it had discouraged Indian import. So British export was promoted to India categorically with a great degree of effort. So it had discouraged Indian export. So rupees and pound exchange rate was fixed in such a way that it had promoted British export and it discouraged Indian import. It discouraged Indian import. So fourth, rupees and pound exchange rate was fixed in such a way that it promoted British export and it discouraged Indian import. Okay, fine. तो these are the forms of them. रेलवेज, इस पर भी आप खास नजर रखेंगे. रेलवेज, railways, the railways was used in such a way that the railways, the biggest contributor in exploitation of India. Exploitation of India, biggest contributor. Exploitation of India. Railways served in two ways. That is, source of raw material was connected to port and from port it was sent to England. From port it was sent to England. And the finished product of England was sent to countryside, was sent to market. Finished product of England was sent to market. So railways served in two ways. Source of raw material, it was connected to port and from port it was sent to England. And the finished product of England was sent to countryside. So this is how the railways served the purpose of the British. Railway had created market for the British industrial product in India. And another dark feature of railway, look at रेलवे ने जितना एक्सप्लॉयटेशन किया, एक और दूसरा जो डार्क फीचर है रेलवे का वो देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट है रेलवे में, इन्वेस्टमेंट इन रेलवेज was exclusive to British investors. मतलब Indians were not permitted to invest in railways. It was exclusive to British investors. Indians were not permitted to invest in railways. Indians were not permitted to invest in railways. It was exclusive to British investors. And those who got opportunity to invest in railway, they got guaranteed interest. Guaranteed interest and share in profit. And share in profit. They got guaranteed interest and share in profit.
they got guaranteed interest and share in profit. Okay, so investment in railway was exclusive to British investors. So this guaranteed interest in share and profit, इसको बोलते हैं डबल प्रॉफिट. Double profit. So double profit, it was sent to England. If Indians would have been permitted to invest in railways, so then obviously this double profit would have saved in India. So capital formation in India, urbanization of India, capital formation in India, urbanization in India, all would have taken place. So that is how the railways served into it. So drain of wealth had a massive impact that the bones and bloods of the cotton weavers of the Deccan, it ultimately turned into the beauty of London. So capital formation as well as urbanization. Second is commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture is a very dark feature of Indian economy. What do you mean by commercialization? क्या समझते हैं आप commercialization से? देखो, commercialization का मतलब होता है shift from food crops to cash crops. Shift from food crops to cash crops. Shift from food crops to cash crops. उसको commercialization बोला जाता है. Shift from food crops to cash crops. मतलब in the beginning of 19th century, British gave extra emphasis on production of cotton, jute, indigo, tea, opium, etc. Cotton, jute, indigo, tea, opium, etc. British get extra emphasis on production of these crops. These crops. So cotton, jute, indigo, tea, opium, etc. देखो एक डाटा है, इसको समझिए. 1800 टू 1860 एक एग्रीकल्चरल डाटा आपके सामने रखते हैं कि एरिया अंडर फूड क्रॉप्स इंक्रीज्ड बाय 43%. मतलब अगर 1800 में 100 एकड़ था तो 1860 में इट बिकम 43%, मतलब 143 हो गया. और एरिया अंडर फूड क्रॉप्स और area under food crops, it increased by 7%. So 43% and 7%. 1800 to 1860. 43% and 7%. So कितना इंटेंसिवली कॉमर्शियल क्रॉपिंग हो रहा था. जरा कॉजेस पर एक नजर डालिए. देखिए कॉजेस, पहला तो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, it was mainly a textile revolution, right? Industrial revolution of England was mainly a textile revolution. टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन. तो जाहिर है कि 80% इंडस्ट्री जो इंग्लैंड का था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री माना जाता.
तो जाहिर है कि इसका जो इम्पैक्ट होगा, दैट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाज टर्निंग आउट टू बी ह्यूज। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग फंडामेंटली इसको देखेंगे। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन है। ओके, तो जाहिर है कि कॉटन पर काफी एम्फेसिस होगा, जूट पर काफी एम्फेसिस होगा, इंडिगो, टी, ओपियम, ये सब एलाइड क्रॉप है जो दैट इज नीडेड फॉर द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, दैट इज नीडेड फॉर द लेबर्स। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, राइट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। सो टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन। दूसरा जो है वो था अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर, देखो अमेरिकन कॉटन dominated in the world market because it was a long fiber cotton. But because of the American Civil War, American cotton was not coming to international market. So there was a huge demand of cotton in the world. There was a huge demand of the cotton in the world. So British smelled the demand, and once the demand was made, once the demand of Indian cotton increased, the British planters started cultivation of the cotton in India. So there was huge upsurge in the cultivation of cotton. Huge upsurge in the cultivation of cotton. Third point, the geographical condition of Deccan. Geographical condition of Deccan. It was iron and titanium. It was a titaniferous soil. Because of the presence of titanium, it looked black. Because of the presence of titanium, it looked black. So Deccan black soil is a metallic soil which is greatly suited for cotton cultivation. Greatly suited for cotton cultivation. This is the cotton soil of Deccan. Black cotton soil of Deccan. Fourth is introduction of railways. Railways added speed to the process of commercialization. It added its speed to the process of commercialization. Right? Because the entire rural market was connected to world market. Entire rural market connected to world market. So railways greatly played a role in the commercialization of agriculture. Fifth, availability of cheap labor. Availability of cheap labor means that the cotton cultivation was a labor intensive process, and the availability of cheap labor that had created the atmosphere of railways, availability of cheap labor. So conducive for the commercialization of agriculture. Conducive for commercialization of agriculture. So look, there are two types of cultivation in Deccan.
The first type of cultivation was, that is, the British planters. British planters, they started cultivation of cotton and they started cultivation on the model of American plantation system, on the model of American plantation system. So Britishers always smell the demand. Second was, that is, individual peasants having a small amount of land, but most part of this was used for cultivation of the cotton. Most part of it was used for cultivation of cotton. Suppose this is a small amount of land they had, and they decided to cultivate the cotton here, most part of it. So obviously the demand of cotton was so high that even the individual peasants were able to sell the cotton in international market with the help of middlemen. So you can see there was a cotton boom in Deccan. There was cotton boom in Deccan, because everywhere there was a cotton, cotton and cotton. So there was cotton boom in Deccan. But problems with the cultivation is that, what is the problems of cultivation? First, British government increased the rate of land revenue on the area. British government had increased the rate of land revenue on the areas where there was a cultivation of cotton. So peasants had to give extra land revenue. Secondly, since it was a money intensive process, so therefore peasants had to borrow money from private money lenders, and they charge very high rate of interest. They charge very high rate of interest. Private money lenders, they charge very high rate of interest. So despite all this problem, it was going good. But after the American Civil War ended, American cotton was superior cotton. So demand of the Indian cotton had decreased significantly. And once the demand of Indian cotton had decreased, obviously the prices of the cotton fall sharply. And then individual peasants, because it was a compulsion for them to grow cotton, because they had to pay the loan and the land revenue. और इसके चलते क्या हो गया कि peasant जो था, it tapped in the vicious cycle of debt. And they had to sell the land in order to pay the dues. उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ी थी because of these things. So there was large scale depeasantization. Peasants had to sell the land in order to pay the dues, so large scale depeasantization. And oppressive method by the moneylenders. So ultimately in 1875 there was a massive Deccan revolt. There was massive Deccan revolt in 1875. There was a massive Deccan revolt. So in this revolt, M.G. Ranade, he played a very significant role. M.G. Ranade,
He was member of the Pune Sarvajanik Sabha. Sarvajanik Sabha. He was a founder, and he greatly helped peasants in the revolt of Deccan, 1875. So finally, British government. And actually, in this revolt, the peasants targeted money lenders. They burned their bond paper, that is the contract paper. So they burned their bond paper, and thereafter they tried to increase the chances of non-payment of land loan. So 1875 and 1879, the British government passed Deccan Agriculturist Relief Act, and then increased rate of land revenue was taken back. So commercialization of agriculture also had a disastrous impact. These are the things which should be in the focus in the examination, right? उसके बाद देखिए destruction of handicraft industries. Destruction of handicraft industries. Destruction of handicraft industries. देखो 19th century में अगर काउंट करें कि I told you that agriculture and the handicraft, these are the two main bases of Indian economy. Agriculture and handicraft, these are the two main bases of Indian economy. Two main bases of Indian economy in the 19th century. But by the closing years of the 19th century, means in the 100 years of the British rule, here the handicraft lost its relevance. Lost its relevance. Handicraft का मतलब ही खत्म हो गया, and India only remained with the source of agriculture. तो केवल और केवल एग्रीकल्चरल सोर्स पर इंडिया की डिपेंडेंसी थी. So destruction of handicraft industries. 19th century. So पहला इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो क्या है, शिफ्ट फ्रॉम मैन टू मशीन. और मैन टू मशीन मतलब मैं आदमी की जगह मशीन काम करने लगा. और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो मशीन मेड गुड्स है वो क्वालिटेटिवली काफी सुपीरियर होता था. जो गुणवत्ता होती थी उसकी क्वालिटेटिवली इट्स वेरी सुपीरियर, एंड इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल. कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल. सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल. सो काफी इसका इंपॉर्टेंस था. और जाहिर है कि हैंडीक्राफ्ट से कंपेयर करें इसका, so handicraft will lose the relevance. Handicraft will lose the relevance. So destruction of handicraft industries. दूसरा जो important aspect है, वो है दादनी सिस्टम. ये समझना, ये सब क्वेश्चन दादनी वर्ड, ये सिस्टम. इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिश कीप ऑन परचेजिंग हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम द इंडियन आर्टिजन्स, बट नाउ ब्रिटिश देमसेल्व्स ट्राई टू कन्वर्ट एज अ प्रोड्यूसर. उन लोगों ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया था और इसमें आर्टिजन्स को एम्प्लॉय करते थे. और आर्टिजन्स को एम्प्लॉय करने के लिए जो मिडिल मैन ये लोग अपॉइंट करते थे उसको बोलते थे गुमस्ताज. ये जो मिडिल मैन होता था ना उसको गुमस्ता बोला जाता था. तो ये लोग गुमस्ता जो अपॉइंट करते थे वहां मिडिल मैन को,
गुमस्ताज बोला जाता था। गुमस्ताज। और दो पेपर होता था, पट्टा और काबूलियत। सो पट्टा और काबूलियत, ये दो पेपर होता था जिस पर पीजेंट्स को साइन करना होता था आफ्टर रीडिंग, या अंगूठे का निशान लगाना होता था, थंब इम्प्रेशन। सो पट्टा होता था वो टाइटल डीड बोलते थे, और काबूलियत जो है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता था। सो पट्टा और काबूलियत, ये टाइटल डीड हो गया और ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है ना। सो पट्टा और काबूलियत बोला जाता था। पट्टा मीन्स टाइटल डीड और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक बार अगर आपने काबूलियत पर अंगूठा का निशान लगा दिया, टर्म्स एंड कंडीशन इतने हार्श होते थे कि कैन नॉट वर्क फॉर द अदर्स। किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते आप खुद के लिए भी काम नहीं कर सकते, आप केवल कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट में जरा भी लापरवाही होती थी तो बहुत ही सीवियर पनिशमेंट था, इनह्यूमन पनिशमेंट था, cutting of the limbs, cutting of the hands. And that is the reason why Dadani system was a very, very important part of the ब्रिटिश सिस्टम। बट सबसे ज्यादा देखो, प्रॉफिट तो केवल कंपनी को होना है, और उससे ज्यादा अगर बात करें तो प्रॉफिट जो है वो गुमस्ताज को होना है। तो जो इंडियंस हैं उसको केवल चॉकलेट टॉफी मिलना है, जो आर्टिजन्स, और दैट टू अंडर द फियर, एंड दैट इज रीजन वाई दे डिस्करेज्ड। ठीक है, ये दूसरा सिस्टम है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट बात देखो, ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। सो ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज में सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो भी है, तो उसमें 60% ऑफ राजा नवाब दे लॉस्ट द स्टेट, दे वेर डिस्पोजेस्ड फ्रॉम द लैंड। मगर ये जो राजा नवाब होते थे इंडिया के, ये लोग बहुत सारे आर्टिजन्स को अपने इंडस्ट्री में अपॉइंट करते थे। दे वर द पैट्रन ऑफ आर्टिजन्स, और आर्टिजन्स जो होते थे उसको क्लाइंट कहा जाता था। क्लाइंट कहा जाता था। सो इसको बोलते थे पैट्रन क्लाइंट लिंकेजेस। पैट्रन क्लाइंट लिंकेजेस। मगर जब ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हो गया और राजा नवाब को अपने लैंड से डिस्पोजेस्ड होना पड़ा, हटना पड़ा, तो जाहिर है कि इस पैट्रन क्लाइंट लिंकेजेस वाज ब्रोकन, एंड बिकॉज द पैट्रन क्लाइंट लिंकेजेस वाज ब्रोकन, so loss of patronage is always discouragement, and therefore तो राजा नवाब और जमींदार जो है वो दे वर द पर्पस सेवर। सो पैट्रन क्लाइंट लिंकेजेस, ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। तो ये भी डिस्करेजमेंट का रीजन है। मगर एक और चीज समझिए, क्या है कि इंडियन सोशल सिस्टम में एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। कास्ट कॉम्प्लिकेशंस तो है इंडिया में। तो देखो क्या है कि जो अपर क्लास होता था उसको हम लोग बोलते थे इंटेलिजेंसिया। अपर क्लास वाज इंटेलिजेंसिया। अपर क्लास वाज इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया का मतलब होता है कि इन लोगों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निकल इनपुट, क्योंकि ये लोग हर एक चीज के डेवलपमेंट के कांटेक्ट में रहता है। सो अपर क्लास इज कॉल्ड इंटेलिजेंसिया, और जो लोअर क्लास है वो है प्रोडक्शन क्लासेस। सो लोअर क्लास इज कॉल्ड प्रोडक्शन क्लासेस, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन क्लासेस। सो अपर क्लास इज कॉल्ड इंटेलिजेंसिया एंड द लोअर क्लास इज कॉल्ड प्रोडक्शन क्लासेस। दोनों के बीच में इतना गैप है कि upper class do not share the modern information with the lower class because there is a caste immobility. कास्ट के बीच में काफी कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए दोनों के बीच में कोई सोशल इंटरेक्शन है नहीं, इसलिए नॉलेज भी बहुत लिमिटेड हो जाए। सो ये जो लोअर क्लास जो कि प्रोड्यूस करता है
their technology will remain primitive and they will lose the production method. So they will lose the production method. They will lose the production method. So upper class is called intelligentsia and the lower classes. तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके चलते काफी बड़ा गैप क्रिएट हो रहा था. इसके अलावा जो टैरिफ पॉलिसी है, टैक्सेशन है ब्रिटिश की, वो भी बहुत ही सीरियस टैक्सेशन थी. सो टैरिफ पॉलिसी, tariff policy of the British was also responsible for tariff policy of British was also responsible for this. Right? So destruction of handicraft. मगर मॉरिस डी मॉरिस जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, उसका कहना था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ मिथ. मॉरिस डी मॉरिस का कहना है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ मिथ. क्या एक्सप्लेनेशन है मॉरिस डी मॉरिस का? देखना, ये कहता है कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1850s के बाद हमने इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए. लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इनपुट्स वाज गिवन इन इंडिया. स्टील इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इंडिया में डेवलप हुए थे. तो जाहिर है कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि जब बड़े इंडस्ट्री डेवलप होते हैं तो हैंडीक्राफ्ट ऐसे भी सर्वाइव नहीं करता. सो हैंडीक्राफ्ट डिड नॉट सर्वाइव. हैंडीक्राफ्ट डिड नॉट सर्वाइव. मगर मॉरिस डी मॉरिस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर ये केवल इतनी ही बात थी, शिफ्ट इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू हैवी इंडस्ट्रीज, तो एक्सपोर्ट पैटर्न इंडिया का कैसे इफेक्ट हुआ वाइडली. राइट? सो दिस इज द रीजन हाउ द मॉरिस डी मॉरिस फेल्ड टू एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ मिथ. इट वाज नॉट अ मिथ, इट वाज अ रियलिटी. फिर देखो, एक और डायमेंशन है इकोनॉमिक हिस्ट्री में, और उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट का सीधा मतलब होता है, इसको बोलते हैं अल्प विकास का विकास. सो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, देयर इज अ वन बिग फीचर, इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ agricultural labor. Growth of agricultural labor. And second was rural indebtedness. Rural indebtedness. So growth of agricultural labor, और इसको बोलते हैं मतलब जो किसान है, पीजेंट है, वो पीजेंट नहीं रहा, वो अपनी जमीन में ही लेबर बन गया. और दूसरा है रूरल इंडेप्टेडनेस. तो ये जो पीजेंट का कैलकुलेशन है, द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल इंडेप्टेडनेस, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडर कोट डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट. अल्प विकास का विकास बोला जाता है. एंड दैट इज अ मार्क, दिस इज अ वेरी सैड फीचर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द इंडियन विलेजेस. तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? व्हाट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड इन दिस?
ठीक है, तो उसमें फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करता है उसमें देखो पहला होगा दैट इज ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट, महलबारी सेटलमेंट, हमने लास्ट क्लास में इस पर थोड़ा नोट्स लिया था, और रैयतवारी सेटलमेंट ये इतना हाई था। समटाइम्स रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू पर्टिकुलरली जो रैयतवारी सेटलमेंट था जिसमें ब्रिटिश के साथ सीधा सेटलमेंट किया, ये 55% तक एक्सीड कर जाता था। और अगर प्रोडक्शन का 55% आप लैंड रेवेन्यू लेंगे तो पीजेंट की परचेजिंग पावर क्या बढ़ेगी, और पीजेंट पूरे साल खाना नहीं खा पाएगा। Now the half fit peasant went half fit, but at least had the money. So peasant went half fit, but at least had the money to pay the land revenue. इसका consequence होगा poverty, famine, revolt, disease. ये सब ब्रिटिश रूल में बहुत कॉमन हो गया। You know, the entire village was suffering from all these poverty, famine, disease, revolt, everything. So that is the 55% of economy was there in the hands of the Britishers. The peasants, whatever they produce, it was not enough after payment of the land revenue. So this is the factor which had created a village economy very poor. Land revenue system had broken the land relations in India. Okay. Second factor था, second factor is let me change the reopen the note 3, it's hanging in between. Okay, so here destruction of handicraft industries. So growth of agricultural labor, it's only not because that's the land revenue. Second factor, first I said land revenue policy. Land revenue policy. Second, that is absence of organized banking system. Absence of organized banking system. ये बैंकिंग सिस्टम काफी ऑर्गेनाइज था, तो अनऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम था। यहाँ पर ब्रिटिश ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह डेवलप तो किया नहीं था, इसलिए जो प्राइवेट मनी लैंडर्स थे, साहूकार, सेठ, महाजन, साहूकार, they were actually making all the possibilities of collecting the land revenue. Seat, Mahajan, Sahukar.
They were charging very high rate of interest. High rate of interest. And the modus operandi of giving the loan is just taking the thumb impression on the plain sheet of paper. तो ये सब लोग जो थे ना लोन उसी तरह से देते थे कि जैसे प्लेन शीट ऑफ पेपर्स में दिया जाता है. सो सेठ, महाजन, साहूकार, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू. ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम. सो अल्टीमेटली ये सफरिंग किस पर है? पीजेंट्स पर है. Peasants will have to suffer a lot. There was a huge suffering of the peasants. So peasants had to suffer a lot. तीसरा है destruction of हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. मैंने कहा कि एग्रीकल्चर के बाद हैंडीक्राफ्ट जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था. बट वंस द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड डिक्लाइंड, इसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होगा कि देयर वाज नो अदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर दे विल माइग्रेट टू एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर जो है ऑलरेडी ओवरफ्लोडेड है. दे वोंट बिकम पीजेंट, they won't become peasant, they will become agricultural labor. They won't become peasant, they will become the agricultural labor. और इसीलिए जो डिस्ट्रक्शन है of handicraft industries, it had disastrous impact on Indian economic system. Disastrous impact on Indian economic system. Fourth factor है destruction of the traditional economic system, traditional family system. देखिए इंडिया में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का ट्रेडिशन रहता है. और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बिकॉज लैंड इज ज्वाइंट, राइट. सो देयरफॉर द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मीन्स लैंड इज ज्वाइंट. और जब लैंड ज्वाइंट है तो इसका इम्पैक्ट भी होगा कि दैट ऑल टुगेदर there will be a big agricultural farm to cultivate. But due to impact of industrialization, family system keep on breaking, so land keep on breaking, so family keep on breaking, land keep on breaking, and finally the breaking of all these things. So there is a small land holding, and in a small land holding there is no scientific cultivation, so we have no option but to decrease the agricultural output. And once the agricultural output will decrease, ultimately it had resulted in decline in the village economy. So impact of industrialization, impact of industrialization is there are two big impact you can assess. One is industrial based urban population explosion. Industrial based urban population explosion. Second, industrial based urban population explosion. Second point is that is breaking of the self-sufficiency of village. So two biggest impact of the industrialization on the Indian economy and the society was the beginning of the industrial based urban population explosion, right?
urban population explosion, and breaking of the self-sufficiency of village. Self-sufficiency of village. So these are the things that you have to keep in mind. Next, one more topic which is a very important topic. It is revolutionary terrorism. Look, there are many streams of national movement, and one is the moderate, second is extremist, and third is revolutionaries. So moderate, extremist, and revolutionary. There are three trends of Indian national movement other than the Gandhis. But by the closing years of the 19th century, you'll find there was a massive upsurge in the revolutionary activities. Actually, these revolutionaries, they were, these revolutionaries, they were very much frustrated with the outcome of the moderate and extremist politics. They believe in active resistance, that is, cult of violence, to spread the terror and to force Britishers to leave India, unpopular British officers to leave India. So, active resistance, that is, targeting the unpopular British officers and forcing them and terrorizing them to leave India. So, because of the political frustration that had generated because of the moderate and extremist failed to deliver anything substantial for the constitutional development of the Indians. So first phase of revolutionary, you can see here Madras, Maharashtra, Bengal. These are the places where we can say there is a maximum revolutionary input. So here in this phase, the first phase means pre-World War. Pre-World War. Pre-World War phase. Means before the advent of Gandhi in Indian politics. So here, revolutionaries were like an individual hero. No organized effort, no social support. You can understand that the violence in Indian society was never sanctioned. So no organized effort, no social support. They were individual heroes. They were having the intense love for motherland. Okay, intense love for motherland. And they were ready to sacrifice their life. So revolutionaries had targeted unpopular British officers. Unpopular British officers. They had targeted unpopular British officers. Officers involved for the anti-India activities. So they targeted unpopular British officers involved in anti-India activities. Anti-India activities. Those who involved in humiliation of the Indians, forcing them, terrorizing them to leave India. So, in Madras, there was a person named, even one murder was a very big event during that time. I told you, because violence in Indian society was not never sanctioned.
So therefore, the cult of violence was an unacceptable part of any movement. So Vanchi Iyer, he killed district magistrate of Tirunelveli, district magistrate of Tirunelveli, Vanchi Iyer, essay. Because essay was responsible for the firing on the mob who were protesting the arrest of the famous extremist leader P. Chidambaram Pillai. So P. Chidambaram Pillai, he was a famous extremist leader who was in the forefront of the anti-partition movement of Bengal and then Swadeshi movement. So P. Chidambaram Pillai, district magistrate of Tirunelveli, and killed essay. Madras, Vanchi Iyer. So P. Chidambaram Pillai was to be arrested and the mob was protesting the arrest, and then essay went on to fire them, and therefore Vanchi Iyer had taken the revenge and then killed essay. Vanchi Iyer, he was associated with the Bharat Mata Society. Bharat Mata Society. And Bharat Mata Society was an organization of V.D. Savarkar. V.D. Savarkar. Okay, so Madras. Then Bengal, Anusilan Samiti. Anusilan Samiti. Anusilan Samiti was established in many parts of Bengal, particularly at the level of district. Anusilan Samiti. When Calcutta, in Midnapur. So Anusilan Samiti was a network of the revolutionaries in different parts of India. So Anusilan Samiti was the organization Sandhya, Yugantar. These are the organization established, which was a revolutionary organization in the different parts of Bengal. In different parts of Bengal. So here the noted leader like Pramoda Mittar, Barindra Kumar Ghosh, Jatindra Mukherjee, Sachin Sanyal, they were in the forefront of revolutionary activities in Bengal. But out of the many things, there was Alipur conspiracy case. In Alipur conspiracy case, actually the famous extremist leader Aurobindo Ghosh, he was on the target. Aurobindo Ghosh, he was the father of the extremist movement. So he was on the target. So Aurobindo Ghosh and his brother Barindra Ghosh. बड़ा भाई एक्सट्रीमिस्ट था, छोटा भाई रेवोल्यूशनरी था. बड़ा भाई थ्योरी देता था, छोटा भाई प्रैक्टिकल करता था. So Aurobindo Ghosh, he was implicated in the Alipur conspiracy case. Last class में हमने डिस्कस किया था कि how beautifully he was defended by C.R. Dash, and thereafter he was acquitted from all charges. And after getting acquittal from all charges, he taken the retirement from the active politics. Barindra Ghosh initially got the death penalty, but later on his death penalty was converted into lifetime imprisonment.
So these are the revolutionary works at the initial level. Arvind Ghosh, he was a father of extremist movement in India. Then Muzaffarpur conspiracy case. Muzaffarpur conspiracy case. So Muzaffarpur conspiracy case 1908. Muzaffarpur conspiracy case 1908. Here Khudiram Bose and Prafulla Chaki. Khudiram Bose and Prafulla Chaki, they were the mastermind tried to kill the district magistrate of Muzaffarpur. Kingsport. District magistrate of Muzaffarpur, Kingsport. Muzaffarpur conspiracy case. Khudiram Bose and Prafulla Chaki. So Prafulla Chaki, he shot himself, and Khudiram Bose, he was hanged after he turned 18. So youngest revolutionary who died. So these are the revolutionary work that was going on. But in the foreign land, we have Shyamji Krishna Burman. Don't forget these names. Shyamji Krishna Burman. Shyamji Krishna Burman, he established India House in London. He started Indian Home Rule League Society. He started publication Indian Sociologist and justified the revolutionary activities. These are the facts and figures. You have to note it down. You have to remember. From here, the question will come. Shyamji Krishna Burman. So, Indian Home Rule Society and Indian Sociologist. Okay. There were many associates of the India House. Even B.D. Savarkar, he was very much associated with India House. B.D. Savarkar, who established Abhinav Bharat, he was very much associated with India House. ये सब facts and figures prelims में आते हैं. तो इन सब facts and figures को आपको बढ़िया से arrange करना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से catch कर पाएंगे. Otherwise, it will be difficult for you to manage all these facts and figures. Okay, Shyamji Krishna Burman. Madam Bikaji Kama, she unfurled the tricolor flag. वो 3 religion के symbols थे, इसको tricolor बोलते हैं, and demanded independence. मैडम बीकाजी कामा ने वंदे मातरम ये न्यूज़पेपर सर्कुलेट किया था. जब वंदे मातरम यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट अ बैन ऑन द वंदे मातरम. जब यहाँ पर बैन कर दिया, तो डिफाइंग दैट बैन, शी स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ वंदे मातरम फ्रॉम पेरिस. तो इस तरह के इन लोगों के जज्बात थे कि कैसे हाउ टू डिफाई द ब्रिटिश रूल. सो वंदे मातरम यहां से इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया था.
जब बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक पर बैन लग गया था, तो दिस इज रीजन हाउ द वंदे मातरम वाज इन सर्कुलेशन। तो मैडम बीकाजी कामा और श्यामजी कृष्ण बर्मन, दे वेर वेरी एक्टिव इन द फॉरेन लैंड। फिर गदर पार्टी, लाला हरदयाल, he established the Gadar party in San Francisco, Lala Hardayal. He was a professor, he was an ideologue, he was a revolutionary leader. लाला हरदयाल का गदर पार्टी का ऑब्जेक्टिव था टू रिपीट द वायलेंट अपरूटिंग, रिपीट द रिवोल्ट ऑफ 1857, revolt of 1857, violent uprooting of British Empire from India. ये लाला हरदयाल का ऑब्जेक्टिव था। इवन रास बिहारी बोस, आप जानते हैं रास बिहारी बोस ने वायसरॉय हार्डिंग पर अटैक किया था, देन ही रैन अवे फ्रॉम चांदनी चौक दिल्ली। सो रास बिहारी बोस वाज आल्सो कनेक्टेड टू गदर पार्टी। सोहन सिंह भकाना, अजीत सिंह, भाई परमानंद, कई सारे नाम हैं जो कि अमेरिका और कनाडा में काफी एक्टिव थे। तो रास बिहारी बोस, ये प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन भी आया था। सो ही वाज वेरी मच कनेक्टेड टू गदर पार्टी। Raspberry Bush. Repeat the revolt of 1857. गदर पार्टी। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का काफी बड़ा इम्पैक्ट, जैसे वासुदेव बलवंत फरके, वासुदेव बलवंत फरके, ही वॉज द अर्लीस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, जिसने कि रामोसी मूवमेंट को लीड किया था, and very critical and very fiery. He was perhaps the first revolutionary leader of India. Vasudev Balwant Farke, he was the leader of Ramoshi movement, and he actually started this revolutionary work 1879. Vasudev Balwant Farke. He started the underground armed revolt against the British. 1890s के दौर में तिलक ने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को काफी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था। ये सब फैक्ट जो है ना, अपने दिमाग में रखिए। तिलक, although he was the member of Congress and he was deeply associated with the extremist group of the Congress, but he supported the revolutionary activities. गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, इन सब के माध्यम से, और फिर केसरी और मराठा जो उनका न्यूज़पेपर था, सो काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। और इसका इम्पैक्ट ये था कि 1897 में जब चापेकर ब्रदर ने, दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर, चापेकर ब्रदर ने रैंड एंड अरेस्ट को, द टू प्लेग कमिश्नर्स ऑफ पूना वाज किल्ड बाय चापेकर ब्रदर्स। नाटो ब्रदर्स बोलते हैं तो इसको, सो अरेस्ट को का मर्डर किया था। इस तरह से तिलक ने काफी, एज अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, बट ही हैड ऑलवेज अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन टू थिंक अबाउट। ही वाज डाइन ऑफ द स्वराज एंड नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे तिलक। ओके, देन उसके बाद नाम आता है कि जैसे नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें जैक्सन was killed. He was a district magistrate of Nasik, DM था। So Jackson was killed
Jackson was killed by Anant Lakshman Kanhare. Anant Lakshman Kanhare. Nasik conspiracy case. Anant Lakshman Kanhare. DM Jackson. और बीडी सावरकर वॉज गाइडिंग हिम। तो बीडी सावरकर और गणेश सावरकर, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन बना था महाराष्ट्र में, मित्र मेला। मित्र मेला गणेश सावरकर ने एस्टैब्लिश किया था। वैसे तो रिवॉल्यूशनरी नेटवर्क था ये, सो गणेश सावरकर ने एस्टैब्लिश किया था। मगर जब मित्र मेला को बैन कर दिया, मित्र मेला जब पूरी तरह से बैन हो गया, तब इसी का नाम चेंज करके बीडी सावरकर रखा। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत कर दिया, अभिनव भारत कर दिया। बीडी सावरकर ने यह नाम चेंज करके अभिनव भारत किया था। सो अनंत लक्ष्मण कन्हारे, बीडी सावरकर। एंड देन अनंत लक्ष्मण कन्हारे को जो पिस्टल था टू किल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक, ये बीडी सावरकर ने उसे दिया था। ओके, सो दिस इज हाउ द बीडी सावरकर was trying to the first phase of the revolutionary movement, it had ended mainly because of three factors. First phase of revolutionary movement, it had ended mainly because of three factors. Okay, पहला फैक्टर तो था कि एडवेंट ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स, एडवेंट ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स। गांधी भारत में आया था एज एन यूथ आइकन। जब गांधी भारत में आए थे, इट एज एन यूथ आइकन, एंड देयरफॉर द गांधी डीपली involved in politics thereafter. Okay, so youth of India wanted Gandhi to give a chance. गांधी को एक मौका देना चाहते थे यूथ ऑफ इंडिया, और इसलिए they left the revolutionary activities and then they wanted to give Gandhian movement a chance. दूसरा था कामागाटा मारू इंसिडेंट। कामागाटा मारू जो एक शिप था जो जापान से कनाडा गया था, बट दैट शिप वाज फोर्स्ड टू सेल बैक टू इंडिया बिकॉज उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि शायद ये जो शिप है, देयर आर मेनी रिवोल्यूशनरीज। और जब कामागाटा मारू को सराउंड किया, सो इन पुलिस फायरिंग मेनी ऑफ इंडियंस हैड डाइड and many died of drowning in the water. So therefore, so Kamagata Maru incident. और जो तीसरा है वो है repressive laws passed by British government, like Rowlatt Act, So these three factors you can look at. So three important factors that led to the end of the revolutionary activities. और फिर जब सेकेंड फेज का रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आता है, सेकेंड फेज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज,
after suspension of non-cooperation movement. Non-cooperation movement. So after suspension of non-cooperation movement, after suspension of non-cooperation movement, youth of India, they once again became very frustrated. Very frustrated. Youth of India once again became very frustrated. And they restarted the second phase of the revolutionary movement. Restarted the second phase of revolutionary movement. So this phase, there was inspiration from Lala Hardayal. Lala Hardayal, he left everything in America and then he was expelled from America and then he shifted to Punjab. Shifted to Punjab. Lala Hardayal. Second important aspect says that revolutionaries were guided by many books that was published at that time, but mostly it was philosophy of bomb. ये बॉम्ब की भी फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब बाय भगवती चरण बोहरा. भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखा था. भगवती चरण बोहरा, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब. Second, Sachin Sanyal, he wrote a book, Bandi Jeevan. Bandi Jeevan. And third, Satyendra Bose, he wrote पाथेर दबी. तो ये सारे बुक्स जो थे काफी इंस्पिरेशनल थे एंड दे greatly inspired the revolutionaries. But revolutionaries were very much inspired by Russian Revolution. And that is reason why there was a left orientation. Revolutionaries, they had left orientation here in this page. After suspension of non-cooperation movement, revolutionaries had a very organized structure and well-defined objective. Objective was very well defined. So, first objective was the establishment of republicanism. Second, secular. And third, socialism. So, all the revolutionaries, they were very much inspired by this republicanism, secularism, and socialism. Right? Republicanism, socialism, and secularism. So they had a well-defined objectivity. So there was establishment of HRA, Hindustan Republican Association, 1924. And Hindustan Republican Association, they were involved in Kakori train action. Kakori train action. Earlier it was known as Kakori conspiracy case, but Kakori train action, but it was a brutal because
At least 17 revolutionaries got the lifetime imprisonment and 4 were hanged. 4 were hanged. Ram Prasad Bismil, Asfaqullah Khan, Rajendra Lahiri, Roshan Singh. So, Ram Prasad Bismil, a founder of the HRA, it was another huge setback, the Kakori train action. It was renamed as Kakori train action. So, Ram Prasad Bismil. Then, the name of HRA was changed to HSRA, Hindustan Socialist Republican Association, HSRA. So name of HRA was changed to HSRA, Hindustan Socialist Republican Association. Hindustan Socialist Republican Association. And then Bhagat Singh. He was in the forefront of this organization. Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad. Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad. Killed Saunders, the infamous police officer who killed Lala Lajpat Rai during the anti-Salmon demonstration. So killed Saunders, infamous police officer, and the Saunders. This is called Lahore conspiracy case. But here the question is very important. When Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt, personalities now these days are becoming very important. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt. So Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt, they involved in throwing bomb in Central Legislative Assembly. Central Legislative Assembly. They involved in throwing bomb in Central Legislative Assembly. Because Assembly was taking the bill, discussing the bill, Public Safety Bill, and Trade Dispute Bill. Public Safety Bill and Trade Dispute Bill. So what is this Public Safety Bill? Public Safety Bill is simply that identification of the communist and then expel them from India. Because British government understood that the communists are dangerous and they are virus against the capitalism. So Public Safety Bill and Trade Dispute Bill, that any kind of a strike in the factory was banned. It was declared illegal. So because of this Public Safety Bill and Trade Dispute Bill, Bhagat Singh was very angry. Bhagat Singh said that the real revolutionaries are in the factories. So Bhagat Singh was very angry, and that is the reason why Bhagat Singh threw bomb in the Central Assembly. This is known as Central Assembly bomb case. Public Safety Bill and Trade Dispute Bill. So Bhagat Singh, he threw bomb in the Central Assembly bomb case. So
Joint trial of both the cases, and finally 23rd March 1931, the Bhagat Singh Rajguru Sukhdev was hanged. So after the hanging of Bhagat Singh Rajguru and Sukhdev, the revolutionary movement was only confined to Bengal. Surya Sen, Surya Sen. Surya Sen, he was secretary of the Chittagaon Congress Committee. There's a very he was office bearer of the Congress. So he was secretary of the Chittagaon Congress Committee, and he was very active in non-cooperation movement as a member of the Congress. But once the non-cooperation movement was taken back, he left that activities, and then he participated in the revolutionary network. So he was involved in revolutionary, but despite being revolutionary, he was a great admirer of Gandhi. And he said that we have to establish the Gandhi Raj. Gandhi Raj. So despite the fact that he was the revolutionaries, which is not in the ideological perspective of Gandhi, but he said that we have to establish the Gandhi Raj. Right? So Surya Sen have to establish the Gandhi Raj. Revolutionary activities, non-cooperation movement. So Surya Sen, he established Indian Republican Association. And what is so important that there were many women revolutionaries of this age. So among the many women revolutionaries, one is the Bina Das. Bina Das. Bina Das, she became graduate and she went to receive the degree because Governor Stevens, he was the governor of Bengal. So he himself was delivering the degree to the students. But Bina Das, she was a member of the revolutionary network. So she taken the degree and fired on the governor. There was so many round of the fires, but in the point blank range, she failed to hit the governor, but she was arrested, charged with attempt to murder. 7 years she stayed in jail, and after coming to jail and after independence, she became the MLA in Bengal, member of Legislative Assembly in Bengal. She received Padma Shri also, but her last life was very mysterious, and she died found dead in the Rishikesh. And here, the Suhasini Ganguly, the noted writer, she wrote a book, A Life of Binadas. Binadas. Keep the track of the some valuable facts that will help you in managing all the prelims question. So Suhasini Ganguly, Life of Binadas. So Indian Republican Association was the name of the organization. So under the guidance of Surya Sen, most successful revolutionary work was made, and that is called Chittagaon Armory Raid. So Chittagaon Armory Raid, most successful revolutionary activities. Chittagaon Armory Raid. Surya Sen, he constituted two committees. One under the leadership of Ganesh Ghosh, and second under the leadership of Loknath Baul. Both tried to
plundered the rifle in the Chittagong armory. They successfully did, but they forget to carry the cartridge. Goli bhul gaya udhar, rifle le aaya. But anyway, they had vacated the entire. Kalpana Datta was in the lead. Kalpana Datta was in the lead of Chittagong armory raid. She was another woman involved in the revolutionary activities. So Ganesh Ghosh and Loknath Baul, this has to be there. Suresh, member of the Revolutionary Network, Indian Republican Association. So finally, Suresh Sen was arrested and he was hanged. And after the death of Suresh Sen, revolutionary movement came to an end. So these are the facts and figures you have to remember. Now let's talk about the some commissions and the committees that you have to remember. Like railway committees and commissions. One is the Robertson Commission. You must remember Robertson Commission, Mackay, Westwood, Robertson, Mackay, Westwood, Ackworth, डिकिंसन, ये सब रेलवे कमीशन था. ठीक है, रॉबर्टसन याद रखिएगा बिकॉज आफ्टर द रॉबर्टसन कमीशन रेलवे बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड. रेलवे बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और एकवर्थ कमीशन दैट सेपरेटेड द रेल बजट फ्रॉम जनरल बजट. सो रेल बजट was separated from general budget. The rail budget was separated from general budget. So ये रेलवे रिफॉर्म कमीशन को रखिए यहाँ. उसके बाद देखिए नेक्स्ट है फेमिन रिलीफ. स्ट्रेची, लॉयल एंड मैकडोनाल्ड, ये तीनों कमीशन जो है वो फैमिन रिलीफ के लिए. These all commissions are related to famine relief. फिर करेंसी के लिए भी है करेंसी रिफॉर्म. उसमें हेनरी, हिल्टन यंग, चैम्बरलैंड. So Henry, Hilton Young and Chamberlain, this is the Currency Reform Commission. Currency Reform Commission. Henry, Hilton Young and Chamberlain. Currency Reform Commission. Okay. So Currency Reform Commission. अब यहां से और एक फंडामेंटल हम आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप कि जैसे मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन. मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन it was
बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, इट वाज बारदोली सत्याग्रह. Second, Flood Commission. Flood Commission was for the sharecroppers. Flood Commission बोलता है कि जो 2/3 पार्ट ऑफ द क्रॉप है, शेयर क्रॉपिंग आप समझते हैं, फसल शेयर करते हैं लैंडलॉर्ड से. सो 2/3 पार्ट ऑफ द क्रॉप ये है टीनेंट का, जिसको आपने जमीन दिया है. ओनली 1/3 क्रॉप फॉर द लैंडलॉर्ड्स. Only 1/3 crops was for the landlords. तो ये फ्लॉड कमीशन था, 1938 में फ्लॉड कमीशन आया था. बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि बंगाल में ये हो जाता था 50-50. इसके चलते देयर वाज तेभागा मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट इन बंगाल, बिकॉज इन तेभागा मूवमेंट दे वांटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लॉड कमीशन. They wanted implementation of the flood commission. 1938 का ये फ्लॉड कमीशन है. उसके बाद है रॉयल कमीशन. रॉयल कमीशन विच इज ऑल्सो नोन एज व्हीटले कमीशन. रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर पर भी है और रॉयल कमीशन लेबर पर भी है, इंडस्ट्रियल लेबर. तो रॉयल कमीशन को सपोर्ट करना है नहीं करना है, इसके लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में डिवीजन हो गया था. एंड देन ऑल इंडिया कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मेनी लेफ्ट ऑन द इशू ऑफ सपोर्ट टू द रॉयल कमीशन. सो इसमें एनएम जोशी और बीबी गिरी, एक लेबर लीडर थे बीबी गिरी. सो एनएम जोशी और बीबी गिरी, इन दोनों ने मिलकर के एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी. इसको बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन. सो रॉयल कमीशन एंड व्हीटले कमीशन. इट इज रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड रॉयल कमीशन ऑन इंडियन लेबर. बटलर कमीशन एग्जामिनेशन में आया था. बटलर कमीशन बोलते थे कि बटलर कमीशन वाज एक्चुअली रिलेटेड टू center-state relations. Butler Commission was related to center-state relations. That is not center-state in the sense, उसमें क्या बोलते थे कि ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स के बीच में क्या है. सो ब्रिटिश इंडिया इज कंसिडर्ड एज सेंटर एंड द प्रिंसली स्टेट्स एज स्टेट्स. सो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, that is in fact it's called the Butler Commission. Butler Commission, British India and the princely states. सिविल सर्विसेज रिफॉर्म पर भी कमीशन है. रिफॉर्म, और इसमें आप डिस्कस करेंगे. That is Aitchison Commission, Aitchison, Islington and Lee Commission. These are the Civil Services Reform Commission. इन सभी कमीशन पर थोड़ा बात करेंगे. एजुकेशन कमीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको क्विक समराइजेशन करता हूं मैं आपसे कि देखिए एजुकेशन कमीशन में द डिस्कशन वाज if there is a question that first 60 years of the company's rule कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था. 1757 to 1813 hardly company was taking interest in education. No interest in education, right? Some missionaries जैसे विलियम कैरे है, विलियम कैरे, they had taken some lead in the Odisha for establishment of the primary schools, but
not so at a large level, and British was not having any interest. बट 1813 के चार्टर एक्ट के बाद आप जानते हैं चार्ल्स ग्रांट, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। चार्ल्स ग्रांट के एफर्ट से ही 1 लाख रुपीज जो था वो एजुकेशन बजट फिक्स हुआ था चार्टर एक्ट में। बावजूद इसके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं चार्टर एक्ट पर, और वो भी 20 ईयर्स तक तो कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं हो पाया। जब मैकॉले का रिपोर्ट आया था कि इंग्लिश को हम लोग एजुकेशन सिस्टम का मॉडल बनाएंगे, और फिर ये सारा डिस्कशन करेंगे कि आगे इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी कि सबको एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन छन छन के नीचे आ जाएगा, इसलिए टॉप स्ट्राटा को एजुकेशन दे दीजिए। सो दैट इज हाउ द मैकॉले हैड प्रेडिक्टेड। और सबसे बड़ा जो मैग्ना कार्टा है दैट इज वुड्स डिस्पैच, काफी बड़ा प्रोविजन था। सो मैग्ना कार्टा दैट इज वुड्स डिस्पैच, वुड्स पर आप जितने भी पॉइंट हैं, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉइंट्स। सो वुड्स डिस्पैच, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। उसके बाद फिर आप हंटर कमीशन पर बात करेंगे, हंटर कमीशन बाय लॉर्ड रिपन, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। इसी ने बोला था कि लोकल बॉडीज को दे दीजिए आप प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी, ठीक है, और सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप हाई स्कूल से ही उसको वोकेशनल कोर्स, लिटरेरी और वोकेशनल, दो तरह के कोर्सेस लगाइए, हंटर कमीशन। उसके बाद थॉमस रॉयले कमीशन, थॉमस रॉयले कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज के ऊपर ज्यादा बड़ा कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद आया सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन 10+2+3 इंटरमीडिएट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के आया था सैडलर कमीशन, कॉलेजिएट एजुकेशन का लेकर के आया था। तो 10+2+3 इंटरमीडिएट एजुकेशन, पहली बार एजुकेशन कमीशन में इंडियंस को शामिल किया गया था, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एंड जियाउद्दीन अहमद। सो इंडियंस को शामिल किया गया था पहली बार एजुकेशन कमीशन में, सो उसको सैडलर कमीशन बोला जाता है। उसके बाद हार्टोग कमीशन 1929, हार्टोग कमीशन 1929, और इसमें बोला गया कि ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट शुड गो टू द यूनिवर्सिटी लेवल और हाई स्कूल लेवल। 7th क्लास के बाद 8वीं क्लास में 8वीं क्लास में आप वोकेशनल कोर्स और लिटरेरी कोर्स को डिफाइन कर लीजिए। सेपरेट टेक्निकल एजुकेशन को हार्टोग कमीशन ने चार्ज किया था। उसी तरह से फिर वर्धा स्कीम है, गांधी जी का जो बुलियामी तामील था, गांधी जी हरिजन न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन के बारे में लिखते थे। तो 1937 में गांधी जी ने एक इंडियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूट किया था, ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसमें गांधी जी खुद प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई गई थी। उसके क्या क्या रिकमेंडेशन है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के, और वोकेशनल और लिटरेरी एजुकेशन के, और इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज के, और लास्ट में सार्जेंट प्लान। तो ये सब एजुकेशनल डेवलपमेंट था। सो आई होप कि मॉडर्न इंडिया हमने आज फिनिश किया, और ये सब आप काफ़ी अच्छे से कैच कर लिए होंगे। मैंने थोड़ा लास्ट मोमेंट में थोड़ा फास्ट कमीशंस एंड कमिटीज आपको अपडेट कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे, और हम लोग इस मोमेंटम को जारी रखेंगे। विल गो अहेड विद द प्रोग्राम ऑफ द एंशिएंट एंड मेडिवल एज वेल। तो करिए फॉरवर्ड हम करेंगे इस मेथड को। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।